हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका क्लासमेट सुशील आप सभी का बीएससी की स्पेशल क्लास पे हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉप 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं विद एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट इनकमिंग एग्जाम। सो फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे, जैसे कि कल के पेपर में भी जैसे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज अपलोड किए थे। इन दैट सेम कंडीशंस all the chapters are covered in that MCQ. Okay, so we can start. बट फ्रेंड्स, मैक्सिमम व्यूअर्स देखते हैं 2000-2500 व्यूअर्स होते हैं, परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि 2000, 3000, 5000 पे व्यूअर्स जाते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए मेहनत बहुत हो रही है। सो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, in NMR spectroscopy is useful for determining the types of the number of atoms in organic molecules. So friends, NMR spectroscopy is useful for determining the types of the number of hydrogen atoms in organic molecules. So the correct option is option number 1 is the correct answer, hydrogen. NMR spectroscopy is useful for determining the types and number of hydrogen atoms in organic molecules. ओके, नाउ जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती थी फ्रेंड्स, वो सबसे पहले ऑब्जर्व हुई थी कब? 1946 में आई थिंक। ओके, 1946 में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व हुई थी, ये भी बात आपको ये माइंड में फिक्स करनी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, what is the multiplicity of methylene hydrogens of a carbon that is attached to a methyl group, okay, and to a methyl group and to a methoxy group? The option is option number 1 doublet, option number B singlet, option number C quartet, and option number D triplets. So friend, option number C quartet should be the right answer. Quartet should be the right answer friends. Quartet हमारा सही आंसर होगा। ओके, so quartet should be the right answer. Multiplicity of the methylene hydrogen of a carbon that is attached to a methyl group and to a methylene groups and to a methoxy group is quartet. Now the question number 3, each of the following compounds has a singlet in its H1 NMR spectrum. Which compounds would have its singlet at the highest frequency? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बोल रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर compound will have its singlet at the highest frequency. Now the question number 4, which of the following compounds would have the single for its methylene hydrogen farthest downfield? So option number D should be the right answer. That is ethyl fluoride. Okay, so ethyl fluoride is a compound would have a signal for its ethylene hydrogens farthest downfield. Now question number 5 friends, question number 5 है how many signals would you expect to see in a H1 NMR spectrum? The chlorocyclobutane is, okay, so option number D5, दैट इज द क्लोरोसाइक्लोब्यूटेंस में कितने जो सिग्नल्स होते हैं हमें एक्सपेक्टेड हो सकता है इन H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो फ्रेंड्स, हमें 5 सिग्नल्स 5 पिक्स मिलते हैं यहाँ पर। ओके, सो 5 शुड बी द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द OH ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल इन ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स अ ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिड्स? ओके, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिए। What is the multiplicity of the OH group of an alcohol in a solution that contains a trace amount of acids? Option A duplet, option B quintet, option C quartet, option D singlet. So option D singlet multiplicity on of a OH group of an alcohol is the solution contains a trace amount of acids. Okay, so singlet option D should be the correct answer because the OH groups contain only one types of the proton. So H is only one types of the proton in OH groups. That's why they can show only the single effect.
Now the question number 7. How many signals as would you expect to see in H1 NMR spectrum of butane? ओके जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन में कितने पिक मिल सकते हैं? तो ब्यूटेन में फ्रेंड्स व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन? ओके सो ब्यूटेन में हमें कितने पिक मिलेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी 2 पिक मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी 2 पिक। हाउ मेनी सिग्नल्स वुड बी एक्सपेक्टेड इन सी द H1 NMR स्पेक्ट्रम इन ब्यूटेन? तो हमें 2 पिक मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स, which of the following will occurs farthest downfield? Hydrogen of benzenes, hydrogen of ethynes, hydrogens of dimethyl ethers and hydrogens of HCOH. So ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ओके ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि यही ऐसा कंपाउंड है जो आकर्ष होता है फॉरदेस्ट डाउनफील्ड। हाइड्रोजन्स ऑफ HO, दैट इज HCOH, that means HC double bond OH, that means formaldehyde. Now the question number 9. How many signals will vinyl chloride have in H1 NMR spectrum is? Vinyl chlorides में how many signals? So option C 3 signals should be obtained in vinyl chloride. Okay, 3 signals may be obtained in vinyl chloride having H1 NMR spectrum. That's why the option number C is the correct answer. Now question number 10. Question number 10. How many signals does the 2,2,4 trimethyl pentane have in its H1 NMR spectrum? That is H1 NMR spectrum. Option number C. That means 4 signals are obtained. Okay. How many signals are obtained, friends? So 4 signals are obtained in H1 NMR spectrum. Okay. Now the question number 11. How many signals would you expect to see in the H1 NMR spectrum of 2-methyl propane? So in that case हमें जो ऑफ्टेन मिलेंगे सिग्नल्स, ओके ये कितने मिलेंगे? 2 सिग्नल्स मिलेंगे 2-methyl propane के केस में। ओके सो ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द 2-methyl propane में हमें कितने मिलेंगे पिक्स? 2 पिक्स मिलेंगे। दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ the question number 12. Which of the following compounds is frequently used as an internal reference in H1 NMR spectroscopy? So option number C, that is TMS, is the correct answer. Now the question number 13. Which of the following describe the H1 NMR spectrum of 1,2 dichloroethanes? So option number D, the one signal should be the right answer. Option number D, one signal describe the H1 NMR spectrum of 1,2 dichloroethane. Now the question number 14. What is the multiplicity of the CS2 hydrogens in CS3O CS2 CS2O CS3? That is option number A, singlet multiplicity of the CS2 hydrogens in CS3O CS2 CS2O CS3. Now the question number 15 friends. Question number 15. What would be the splitting of the protons? What would be the splittings of the protons on the CS2 groups of butane? The correct option is option number C, that is a triplet. ट्रिपलेट हमारा सही आंसर होगा। ट्रिपलेट स्प्लिटिंग ऑफ द प्रोटॉन्स ऑफ द CS2 ग्रुप्स ऑफ द ब्यूटेन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16. Only one signal is present. Only one signal is present in, that is PMR spectra of dash. So that is CS2 C2S4 C3S6 C2S6 and C5S12 C8S18 and C2H6, all of the above. So friends, only one signal is present in PMR spectra of all of the above हमारा करेक्ट आंसर होगा। all of the above क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। now the question number 17. a proton Hb is coupled to form to 4 equivalent protons, that is Ha. The multiplicity and the relative intensity of lines in a signals Hb is, that is option number C, 1:4:6:4:1 should be the correct answer. Now question number 18. The compound showing only a single peak in its, that is PMR spectrum, or
The compound showing only a single peak in its PMR spectrum are acetone 1, ether 2, methyl acetate 3, dibromoethane 4, and chlorocarboethane is 5. So option number A 1, 2 and 4. 1, 2 and 4 is the correct answer. And dibromoethane not showing a single peak. Also the that is chlorobromethane not showing a single piece. That's why that answer and that answer is wrongly. So only methyl acetate. Okay, methyl acetate and acetone should be the right answer. Now the question number 19. The aldehydic protons appears much downfield in PMR because the acidic is aldehyde proton is the aldehydic proton appears much downfield in NMR, that is PMR, because the aldehydic proton is. The option is strongly shielded. Option B, it lies in the dishielding zone of a carbonyl groups. Option C, it occurs at 10 to 8 ppm, and all of the above. So friends, जो aldehyde protons appears much downfield in PMRs because the aldehydic proton is strongly shielded रहता है. It lies करता है acid that is deshielding zone में, and it occurs the 108 ppm. That's why the option number D means all of the above is the correct answer. Okay, now the question number 20. The actual value of nuclear spin depends on. The actual value of the nuclear spins is depends on the mass number and the atomic number. क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. जो एक्चुअल वैल्यू रहती है न्यूक्लियर स्पिन की वो डिपेंड्स रहती है mass of the number and atomic number. Okay, now the question number 21 and the change in the units. Now friends, 1 unit complete हो गया in NMR spectroscopy. सो यूनिट्स के MCQ पसंद आए होंगे तो लाइक बटन को हिट कीजिए. ओके, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को भी प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा. ओके, नाउ द ऑर्गेनिक सिंथेसाइज विया इनोलेट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 1. फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप. सो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट मीन्स that is both A and B should be the correct answer. CH3 CO CH2 CO CH3 CN CH2 CO CH3, that is the methylene group. Okay, now question number 2. Which of the following does not have an active methylene group. इनमें से कौन सा ग्रुप एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं है. that is ethyl nitrate. Here is a carbon is present also. CH3 CO CH2 CO CH3. B option. C option is CN CH2 CO CH3 and D option CH3 CH2 NH2. So friends, जो D option है वो methylene groups है and it is not active. Now the question number 3. Which of the following is not an active methylene compounds. Question number 5 friends. The जो पेंटानोइक एसिड्स रहता है हमारा, विच वन फ्रेंड्स, द पेंटानोइक एसिड. ओके, जो पेंटानोइक एसिड है हमारा फ्रेंड्स, सो पेंटानोइक एसिड्स ऑफ द ओके इज नॉट एन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप्स. नाउ द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ईस्टर. ओके, and formation is that reaction condition that is NaOR and H2O plus. So the formation is the beta keto esters and byproduct is alcohol. So name of the following reactions, that is Klein-Chain condensation. Condensation हो रहा है भाई. Okay, that's why the Klein-Chain condensation reaction है. Okay, कौन सी reaction है? Klein-Chain condensation reaction. Now question number 5 friends. Which of the following is most acidic compounds. यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ से कौन सा मोस्ट ऑफ द एसिडिक कंपाउंड है वो हमें फाइंड आउट करना है.
तो सिंपल कार्बन है, कार्बन सी डबल बॉन्ड वो है CH3 है एंड CF3 है। सिंपल सी डबल बॉन्ड हो CH3 है। ऑप्शन सी में सिंपल सी डबल बॉन्ड हो CH3 वो आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी में सिंपली सी डबल बॉन्ड हो CH3NH2 है। सो फ्रेंड्स जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ओके, जो हमारा ऑप्शन नंबर ये है फ्रेंड्स, ओके, जो ये है ना, ए करेक्ट आंसर है हमारा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। बिकॉज इसमें जो आप देख सकते हो, ओके, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें CF3 लिखा हुआ है, ओके, CF3 लिखे हुए हैं। सो द फ्लोरीन CF3 ग्रुप अटैच है, दैट्स वाई द इट इज मोस्ट एसिडिक कंपाउंड्स because the fluorine is attached here. Now the question number 6, which are the most acidic alpha hydrogen in the following compounds? So option number C, third जो है, that is the most acidic alpha hydrogens in the following compounds. ओके, जो आपको ये दिख रहा है जैसे कि यारो शो किया हुआ है यहाँ पर, ओके, दैट इज मोर एसिडिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा हाइड्रोजन शो द मोर एसिडिटी? इनमें से कौन सा अल्फा हाइड्रोजन है और शो करता है मोर एसिडिटी को? सो यहाँ पर जो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी दिया है और जो सी है, ओके, ये शो करता है अल्फा हाइड्रोजन, शो करता है मोर एसिडिटी को। ओके, ये वाला कंपाउंड है हमारा, ये शो करेगा मोर एसिडिटी को, ये शो करेगा हमारा फ्रेंड्स मोर एसिडिटी को। दैट्स वाई द ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एसिटोएसिटिक एस्टर ऑन रिएक्शन विद यूरिया गिव्स व्हाट? एसिटोएसिटिक एस्टर के साथ अगर हम रिएक्शंस करते हैं तो विद और यूरिया, ओके, एसिटोएसिटिक एस्टर्स ऑन रिएक्शन विद यूरिया एंड गिव्स दैट इज ऑप्शन नंबर डी 4 मिथाइल यूरासिल हमें फॉर्मेशन रहा है। द फॉर्मेशन इज दैट द 4 मिथाइल यूरासिल, ओके, 4 मिथाइल यूरासिल is obtained. Now the question number 9. Question number 9 is that choose the correct option which show the keto-enol tautomerism. That is CH3, CH2OH, acetone, benzene, phenol. So option number B, acetone क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, दैट इज acetone is a compound that show the keto and enol tautomerism. नाउ इन द गिवन एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज 1, ओके, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 and okay, so one one is enol form and two is keto form. One is enol, that is two is enol and form, and one is keto form. One is enol form and two is enol form, none of the above. So friends, option number B, that means two is enol form. Two is enol form means alcohol containing groups. Friends, enol form, that means the alcohol containing group. Okay, enol form means what? Enol form means alcohol containing groups. That is alcohol containing group. That is alcohol containing group, friends. That is alcohol. Okay, and that is the C double one ketone. That is ketone group containing. Okay, that is the ketone containing group. That is the ketone, and that is the enol. Okay, so option B is that, friends, that is 2 is enol and 1 is keto form. Okay, now the question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है फ्रेंड्स, 10 ही है, क्योंकि अभी हमारा थर्ड यूनिट लगा है, फैट्स ऑयल एंड डिटर्जेंट्स, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैट्स ऑयल एंड डिटर्जेंट्स, हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, फैट्स ऑयल एंड डिटर्जेंट्स, आप जान सकते हो कि ऑयल के भाव कितने बड़े हैं, ओके, फैट्स के भाव आल्सो कितने बड़े हैं, एंड डिटर्जेंट के भाव में भी कितनी बढ़ोतरी हुई है। सो द क्वेश्चन नंबर 1, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैट इज, जो मेल्टिंग पॉइंट है फैट का वो व्हाट, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑयल इज। सो फ्रेंड्स, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जो फैट रहता है उसका ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑयल। आप सिंपल भी बता सकते हो। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन नंबर सी हायर रहेगा। ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैट इज हायर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑयल इज लोअर।
Now which of the following is an example of fats? That is option A glycerin triosylate, option B vegetable ghee, option C coconut oil, option D groundnut oil. So friends, vegetable ghee is an example of fats. Okay, so जो vegetable ghee है हमारा is an example of fats, एक correct answer है. Okay, this is a vegetable ghee. Now the question number 3 friends. Question number 3. Select the incorrect statements from the following option. So option 1, oil or saturated triglyceride. Oil have lower melting points. Oil are liquid at room temperature. Examples of oils are glycerol, that is triolate, coconut oil, olive oil, etc. So friends, ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है. That means the statement is incorrect. Oil or saturated triglycerides, that is the incorrect statement. बट जो रिमेनिंग स्टेटमेंट में है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो बी वाला है, ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, एज कम्पेयर टू फैट्स. सो ऑयल एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सही तो बात है, लिक्विड भी रहता है रूम टेम्परेचर में. एग्जाम्पल्स ऑफ ऑयल्स आर ग्लिसरॉल, टॉलरेंट, कोकोनट ऑयल एंड ओलिव ऑयल्स एक्सेट्रा. So these are also correct. So the statement incorrect is that only one. That's why the correct answer is the oil or saturated triglyceride. Now the question number 4. Which of the following is not a suitable solvent for oils and fats? सो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स एंड फैट्स की, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है इज नॉट सुटेबल सॉल्वेंट फॉर फैट्स एंड ऑयल. बेंजीन भी आता है, सीसी दैट इज क्लोरोफॉर्म भी आएगा एंड वाटर भी आएगा, वाटर नहीं आ जाएगा. ओके, सो दैट्स वाई द वाटर शुड बी द राइट आंसर. दैट मीन्स द ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द राइट आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. सपोनिफिकेशन इज हाइड्रोलाइसिस. Saponification is hydrolysis of what? So saponification is hydrolysis with by alkali. Okay, saponification is hydrolysis with by alkali. Now friends, the question number next, that is 6. Hydrogenation is the conversion of unsaturated acid group into the saturated one by a catalyst. Okay, one by a catalyst. So hydrogenation is the conversion of saturated acid group into the saturation one by acid, is, that is the correct answer is nickel. Okay, correct answer is what? Nickel. And friends, what is the atomic number of, okay, what is the atomic number, what is the atomic number of nickel? Okay, atomic number of nickel, please write in comment box what is the atomic number of nickel. Now the question number 7. Vegetables ghee is manufactured by, in which process? So vegetables ghee is manufactured by, that is hydrogenation process. Okay, जो मैन्युफैक्चर्स किया जाता है वेजिटेबल घी को by which process? That is hydrogenation process. Now the question number 8. Triglycerols, tri triacetyl triacyl glycerols, और जो triacyl glycerols होता है और what? So friends, जो ट्राइग्लाइसरल ग्लाइसरल होता है, ओके, ट्राइअसाइल ग्लाइसरल होता है, वो होता है दैट इज एनर्जी रिच कंपाउंड होता है. ट्राइअसाइल ग्लाइसरल क्या होता है? एनर्जी रिच कंपाउंड्स होता है. एंड ट्राइअसाइल ग्लाइसरल can be stored in unlimited amounts, non-polar in nature, also a non-polar in nature. That's why the correct option is D. All of the above should be the right answer. Now question 9. Oil and fats are converted to soap in a process called as which process? So oil and fats are converted to soap in a process called saponification process. Okay, oil and fats are converted. Oil and fats are converted to soap in a process called as saponification process. Now, which of the following is a source of that is natural fats? Which of the following is a source of natural fats? That is whole eggs,
fatty fish, nuts, all of the above. So correct option is all of the above. That means whole eggs, fatty fish and nuts. Okay, are source of the natural fats. whole eggs भी है, fatty fish भी है and nuts भी है. So these are the source of the natural fats. Now the question number 11. Industrial जो industrially vegetable oil can be extracted from. Okay, so industrial vegetable oil can be extracted from soybean, sunflower, and peanuts also. ओके जो इंडस्ट्रियल दैट इज इंडस्ट्रियल जो वेजिटेबल ऑयल होता है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सोयाबीन से भी, सनफ्लावर से भी, ओके पीनट से भी करते हैं. दैट्स वाई ऑल ऑफ द अबव हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 12. सोपोनिफिकेशन इज द वैल्यू ऑफ ऑयल. सोपोनिफिकेशन क्या है, इज द वैल्यू ऑफ ऑयल है फॉर विच ऑफ द which the number of mgs of KOH required to saponify the dot present in the 1 gram of oil. So option A फैटी मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा. ओके, फैटी मटेरियल. सोपोनिफिकेशन इज द वैल्यू ऑफ ऑयल फॉर विच द नंबर ऑफ mgs of KOH required to saponify the fatty materials present in the 1 gram of the oil. ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं फ्रेंड्स. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोपोनिफिकेबल. सोपोनिफिकेबल सो जो हमारा मिनरल ऑयल है, मिनरल ऑयल और नॉट सोपोनिफिएबल. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोपोनिफिएबल. सो मिनरल ऑयल होता है हमारा फ्रेंड्स, वो क्या होता है, सोपोनिफिएबल नहीं होता. ओके, सो ग्राउंड नट ऑयल भी सोपोनिफिएबल होता है, कैस्टर ऑयल भी सोपोनिफिएबल होता है एंड कोकोनट ऑयल भी सोपोनिफिकेशन होता है. बट अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं इसकी मिनरल ऑयल की, तो ये सोपोनिफिकेट नहीं होता. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. डैश जेल लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कली टू हाइड्रोलाइसिस. सो फ्रेंड्स जो वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल जेल लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कली एंड हाइड्रोलाइसिस. सो ऑप्शन नंबर सी should be the right answer. Okay, now the question number 15. The saponification value of vegetable is called. जो सोपोनिफिकेशन वैल्यू रहती है किसकी, वेजिटेबल्स की, कैसे रहती है, वेरी हाई रहती है. सोपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ वेजिटेबल इज व्हाट, वेरी हाई. वेरी हाई ये करेक्ट आंसर है. ओके, द सोपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज वेरी हाई. नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Iodine value is used to determine the degree of acidity, degree of unsaturation, degree of saponification and degree of esterification. So friends, iodine value is used to determine the degree of unsaturation. Okay, what degree of unsaturation? Iodine value is used to determine the degree of unsaturation. That's why the option number B should be the correct answer. Okay, option number B correct answer है. Now the question number 17. The number of milligrams of KOH required for the saponification of 1 gram 1 gram or fat is called. Okay, the number of milligrams of KOH required for the saponification of 1 gram of oil or fat is called the saponification. Number of milligrams of KOH required for the saponification of 1 gram of oil or fats is called saponification value, friends. Now the iodine number is defined as the number of grams of iodine needed for the ionization of option C. That means the 100 gram of oil. Okay, 100 gram of oil, 100 gram of oil or fat or use. Iodine number is defined as, क्या होता है iodine number, gram of iodine needed for iodine, that is iodination of 100 gram, 100 gram oil और fat. अगर 100 gram oil और fat के लिए जो जितने अमाउंट में जो क्या है आयोडीन की आवश्यकता होती है, दैट इज द नंबर आयोडीन number of grams of iodine needed for the iodination of the 100 grams of the oil and fats. Now the question number 19. Which of the following tells the amount of free fatty acids present in oil and fats? So friends, acid number हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, एसिड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा. एसिड नंबर tells the amount of free fatty acids present in the fats and oil. Okay, now the question number 20. Sodium alkali sulfonate is what?
sodium alkali sulfonate is the anionic surfactant. Okay, the sodium alkali sulfonate is an anionic surfactant. Now the question number 21: which among the following is a common salt in detergent? Which among the following is an common salt in detergents? So option number A, sulfonate, should be the right answer. Sulfonate among the common salt in a detergent. Now, which of these chemicals is used in the dissolve the soap to make the transparent soaps? That is option number B, ethanol. Ethanol are a chemical and is used to dissolve the soap to make a transparent cells. Okay, सोप में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इथेनॉल को मिक्स किया जाता है. Now friends, the synthetic dyes, the visible light consists of the electromagnetic radiation of wavelength is what? So friends, option number B. ओके, कल के भी क्लास में मैंने बताया था जो विजिबल लाइट रेंज रहती है और रहती है दैट इज 400 टू 800 सिंपली बताया था मैंने. ओके, 400 टू 800 सिंपली बताया था, जैसे कि यहाँ पर 750 बताया है. ओके, और फ्रेंड्स हम अल्ट्रावायलेट की बात कीजिए, यूवी की अगर बात करते हैं तो वो होती है 200 टू 400. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. ओके, 200 टू कितना होता है, 200 टू या 400 होता है. सो यूवी आल्सो importance and the visible light is also important. Now the question number 2: if a substance absorbs a wavelength in a blue green regions, the spectrum it appears, the color is what? So friends, अगर ब्लू ग्रीन रीजन्स में स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब करता है तो जो कलर हमें ऑब्जर्व होता है फ्रेंड्स, वो कलर हमें रेड ऑब्जर्व होता है. ओके, if the substance is absorbed the wavelength in the blue green region, the spectrum is appears in red. Now the question number 3 friends, the color of the organic compound is due to the presence of certain bonds. So option number C, that is multiple. The color of organic compound is due to the presence of the multiple bond. ओके, मल्टीपल बॉन्ड की वजह से जो कलर्स ऑफ द कलर होता है हमें शो होता है. कलर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सर्टन बॉन्ड, दैट मीन्स मल्टीपल बॉन्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द क्रोमोफोर एंड ऑक्सोफोर थ्योरी वाज गिवन बाय. जो क्रोमोफोर एंड ऑक्सोफोर थ्योरी है हमें किसने दी? तो द क्रोमोफोर एंड ऑक्सोफोर थ्योरी वाज गिवन बाय ऑटोविट. Which scientist? Otto-Witt should be the right answer. Chromophore and oxophore theory was proposed by Otto-Witt. Now, the question number 5, that is the group present along with the chromophore, such color, that is assisting group, are called as. So, the group present along with the chromophore, such color assisting group is called as, that is oxochrome. Okay, oxochrome. Now the question number 6, that is मेलासीड ग्रीन is an example for which dye. जो मेलासीड ग्रीन होता है ये एग्जाम्पल ऑफ विच डाई, कौन सी डाई का एग्जाम्पल है? दैट इज ट्राई अरेल मीथेन डाइज. ओके, ट्राई अरेल मीथेन डाइज का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ट्राई अरेल मीथेन डाइज का एग्जाम्पल है. ओके, जो मेलासीड है ग्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राई मीथेन डाइज, ट्राई अरेल मीथेन. Now question number 7, in alkaline solution the Congo red in a color. Okay, in alkaline solution जो Congo red होता है ये कौन सा कलर शो करता है फ्रेंड्स? तो ये ब्लू कलर शो करता है. in alkaline sodium the Congo red is in the color is blue. Now the question number 8, indigo is an example of which dye? Indigo is an example of which dye? Direct dyes, what dyes, dispersed dye, and azoid dye. So friends, indigo is an example of what dyes? Okay, indigo is an example of what dyes. Now the question number 9, how many azo groups, that is dicongo red, consist? So the 3 azo groups consisting a dicongo red. Okay, the 3 groups are present in the, that is dicongo red. Now nitro group is an which? So nitro group is an the chromophore. Nitro group is a type of chromophore. Okay, now अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स. ओके, नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, मैराथन रहने वाला है फ्रेंड्स, लेकिन 1 बार अगर आपने रिवीजन कर ली तो 100% श्योर कि यही
इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, that is palmitoleic acid, that is 16:1 ratio, classified as is what? So classified as the that is monosaccharide. Okay, so that is that is palmitoleic acids classified as a monosaturated fatty acid. Now question number 2, chemically fats and oils are, जो chemically fats and oils रहते हैं वो what? So chemically fats and oils are what? तो chemically fats and oils are esters. Okay, generally fats and oils क्या होते हैं? esters ही होते हैं. Now which of the following is used reactions called as the saponification reactions. So friends, अगर बात करते हैं strong base is used, in the reactions called the saponification reactions. Now question number 4, that is a triglyceride contains lauric acid in 12:0 ratio and linoleic acids 18:2 ratio and the palmitoleic acid 16:1. How many moles of H2 are required to completely hydrogenate of this glyceraldehyde? So friends, अगर बात करते हैं ओके क्वेश्चन नंबर 4 की, सो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 moles of H2 is required. Now question number 5, which of the following is classified as steroid? Which of the following are classified as steroid? The जो cholesterol होता है फ्रेंड्स, cholesterol are classified as steroid. Okay, so cholesterol are classified as steroids. Now question number 6, glycine is the only naturally occurring amino acids that is, okay, so glycine होता है that is not chiral. Glycine is only naturally occurring amino acid that is not chiral. Now the question number 7, फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम, तो सेट that is in the peptide share, that is LYS and ARG, and gly the N terminals is, the N terminal is what friends? The N terminal is that is a share. Okay, now the question number 8, friends, a tripeptide contains that is triper, pro and gly. How many different sequences are possible? So friends, question number 8 का करेक्ट आंसर होगा 6. That means option number 1. Okay, the 6 different sequences are possible in tripeptide. Now question number 9, which of the following is a secondary protein structure? Which of the following is a secondary protein structure? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ बीटा पिलेटेड सीट. बीटा पिलेटेड सीट, ओके, इज अ सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर. व्हाट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन पूछ सकता है, सो बीटा पिलेटेड सीट्स ध्यान में रखने का. नाउ पार्टीशन or complete, that is disorganization of protein in 3-dimensional shape is called denaturations. Okay, completely deorganization होना proteins का, that is denaturation process. 3-dimensional shapes is called denaturations. Okay, that's why the option number D should be the correct answer. Now question number 1 friends, another PDF. The question number 1 is that carbohydrates are also known as or what? So friends, carbohydrates are also known as that is hydrates of carbon. Option number 1 हमारा correct answer होगा, carbohydrates are also known as the hydrates of carbon. Now question number 2, that is the class of the carbohydrate which cannot be hydrolyzed further is known as, that is the class of carbohydrates which cannot be further hydrolyzed is called as, that is monosaccharides. Okay, monosaccharides ऐसा that is carbohydrates they cannot be further hydrolyzed. Okay, now the question number 3, chitin consists of what? So friends, chitin is consist of N-acetyl
Chitin is consist of N-acetyl glucose, that is glucose amine. Chitin is consist of N-acetyl glucose amine. Option number B correct answer. Now क्वेश्चन नंबर 4, अमाइलोपेक्टिन हैज। सो फ्रेंड्स जो अमाइलोपेक्टिन होता है, अमाइलोपेक्टिन हैज द अल्फा 1,4, ओके, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज होता है। कैसा होता है? अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज होता है। ओके, अमाइलोपेक्टिन हैज अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेलुलोज इज मेड अप ऑफ व्हाट? Cellulose is made up of, cellulose is made up of, that is beta 1,4 linkage between D-glucose units. Okay, beta 1,4 linkage between the D-glucose units. Okay, that's why the option number 1, beta 1,4 linkage between D-glucose units should be the correct answer. Now question number 6, starch consist of what? स्टार्च में क्या रहता है? अनब्रांच अमाइलोज एंड ब्रांच अमाइलोपेक्टिन, ब्रांच अमाइलोज एंड ब्रांच अमाइलोपेक्टिन, अनब्रांच अमाइलोज एंड अनब्रांच अमाइलोपेक्टिन, and D none of the above. So friends, starch consists of unbranched amylose and branched amylopectin. Okay, starch consists of unbranched amylose and branched amylopectin should be the correct answer. Now friends, the question number 7, in maltose द लिंकेज इज, माल्टोज का लिंकेज कैसे रहता है? ओके, तो माल्टोज का लिंकेज रहता है फ्रेंड्स, वो अल्फा 1,4 लिंकेज रहता है। ओके, माल्टोज लिंकेज इन अल्फा 1,4, अल्फा 1,4 लिंकेज रहता है माल्टोज का। नाउ इन लैक्टोज द लिंकेज इज व्हाट? लैक्टोज का लिंकेज रहता है दैट इज अल्फा 1,2 लिंकेज। ओके, लैक्टोज का लिंकेज रहता है अल्फा 1,2 लिंकेज, लैक्टोज कॉन्सिस्ट ऑफ अल्फा 1,2 लिंकेज। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स, सुक्रोज इज व्हाट? तो फ्रेंड्स जो सुक्रोज होता है हमारा, सुक्रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायसैचराइड्स। ओके, सुक्रोज कैसे होता है? डायसैचराइड्स होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन पॉलीसैचराइड्स मोनोसैचराइड्स आर ज्वाइंड बाय विच? जो पॉलीसैचराइड्स रहता है, इन पॉलीसैचराइड्स मोनोसैचराइड्स आर ज्वाइंड बाय द पॉली, दैट इज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, सो पॉलीसैचराइड्स मोनोसैचराइड्स आर ज्वाइन होते हैं किससे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग और रिड्यूसिंग शुगर्स? सो फ्रेंड जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज द रिड्यूसिंग शुगर्स। नाउ अगर बात करते हैं हम किसकी, ग्लाइकोजिन इन एनिमल्स आर स्टोर्ड इन विच फॉर्म? ओके, इन विच? तो ग्लाइकोजिन इन एनिमल्स आर स्टोर इन लिवर एंड स्प्लीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ग्लाइकोजिन इन एनिमल्स आर स्टोर इन, दैट इज द लिवर एंड स्प्लीन। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्लाइकोजिन इन एनिमल्स आर स्टोर्ड इन लिवर एंड स्प्लीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, न्यूट्रिशनल पॉलीसैचराइड्स आर व्हाट? जो न्यूट्रिशनल पॉलीसैचराइड्स रहता है फ्रेंड्स, वो स्टार्च एंड ग्लाइकोजिन होता है। क्या होता है? स्टार्च एंड ग्लाइकोजिन होता है। द न्यूट्रिशनल पॉलीसैचराइड्स आर स्टार्च एंड ग्लाइकोजिन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सैचुरेटेड पॉलीसैचराइड्स होते हैं इंक्लूड सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड काइटिन। ओके, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड काइटिन इंक्लूड होता है, दैट इज सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड काइटिन, these are the structural polysaccharides. Now the question number next, carbohydrates are, that is carbohydrates are पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डेहाइड एंड कीटोन्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डेहाइड एंड कीटोन्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डेहाइड एंड कीटोन होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज व्हाट? द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज व्हाट? दैट इज CH2O of n times. That's why option number 1 is the correct answer, friend. That is CH2O of n times is the correct answer, general formula of carbohydrates. Now the next questions, that is the major function of carbohydrates include, option A structure framework, option B storage, option C both A and B. So friends, the option number बात की जाए किसकी, 21 के आंसर की, so option number 1 that is both A and B, that means structure framework and storage devices में काम आता है। ओके, द मेजर फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड, दैट इज द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क एंड स्टोरेज, बोथ आर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द अर्थ इज व्हाट? सो फ्रेंड्स, द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द अर्थ इज, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज इनर्ट शुगर? जो सुक्रोज होती है फ्रेंड्स, सुक्रोज को हम आल्सो नोन एज इनर्ट शुगर। ओके, सुक्रोज को हम इनर्ट शुगर भी कहते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फाउंड इन माल्टोज। जो माल्टोज है, माल्टोज में विच ऑफ द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमें फॉर्म मिल रहा है, दैट इज ग्लूकोज अल्फा 1 to 4 ग्लूकोज। ओके, अल्फा 1 to 4 लिंकेज हमें फॉर्मेशन मिलते हैं, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ग्लूकोज अल्फा 1 to अल्फा 4 ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। नाउ द लास्ट वन क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो शुगर आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। ओके, जो बैक्टीरियल सेल वॉल्स होते हैं उनमें से कौन सा अमाइनो शुगर प्रेजेंट रहता है। सो एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। ओके, बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट रहता है एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड्स, दैट्स वाई द एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारा मैराथन विथ केमिस्ट्री 2 ऑर्गेनिक पेपर का मैराथन था। लगभग हमने इस मैराथन में लगभग 75 क्वेश्चंस कर लिए। ओके, 75+ क्वेश्चंस कर लिए फ्रेंड्स इस मैराथन में हमने। ओके, सो उम्मीद है कि इस मैराथन में से 75+ क्वेश्चन हमने कर लिए, सो 45+ क्वेश्चंस इस मैराथन में से पूछ लेना चाहिए। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 45 क्वेश्चंस जो हमने 75 लिए थे। तो आउट ऑफ 75 45 तो आपके पेपर में डेफिनेटली आएंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने के लिए। न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक बटन को भी प्रेस कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।